In this video you will learn how to use drag and drop feature of NetBeans to use checkboxes while building GUI in Java. Next video. How to use lists in Java. You can also use checkboxes in your GUI application. In checkboxes, you need to provide some choices to the user, and the user can select one or more than one choices at the same time. The main difference between checkboxes and radio buttons is that in radio buttons you can select only one of the given choices, but in checkboxes you can select one or more than one choices. For example, this is a simple application. You can order pizza, at the same time you can order burger and you can order tea as well. तुम्हारे पास यहाँ पे जितने भी choices हैं, आप उनमें से किसी एक या more than one choices अगर at the same time user से लेना चाहें, तो for this purpose you can use checkboxes. You can see in the given options, you can drag and drop checkbox on the JFrame. You can drag and drop one or more than one checkboxes at the same time. Now let me show. If we run this application, then user can select one or more than one choices at the same time. रेडियो बटन्स में हमारे पास जितने ऑप्शंस थे वो उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी कि आपके पास जितने भी चॉइसेस हैं यूज़र एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकता है. एंड फॉर चेक बॉक्सेस देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बटन ग्रुप. लेट अस मेक सम प्रॉपर टेक्स्ट ऑन दिस चेक बॉक्सेस. फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ऊप. यू कैन यूज़ अनदर कोर्स लाइक MPL फॉर modern programming languages, and this could be some other course like software engineering. तो हमारे पास ये different courses हैं, and as you can guess, you can select one or more than one courses in one semester. So in these kind of situations you need to provide the options by using checkboxes. Now the question could be how to see कि user ने इनमें से कौन से checkboxes को run time पे select किया हुआ है. तो let me use a text area. A text area is another component. हमारे पास जो JText field है उसमें आप जो कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं that is displayed on single line. But in JText area you can display the text in multiple lines. तो अगर हमारे पास आउटपुट ज़्यादा होता है तो ऐसा करने के लिए you can use text area. अगर आपने सिंपल एक सिंगल लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करानी है या इनपुट लेनी है तो for that purpose you need to use JText field. तो हम यहाँ पे चूँकि डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूज़र आपको डिफरेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करके दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें जे टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड होगा जिसमें हम ये सारे ऑप्शंस को डिस्प्ले कर सकें कि व्हाट आर द गिवन चॉइसेस एट वन टाइम. अगेन दे शुड हैव सम प्रॉपर नेम्स. बाय डिफॉल्ट द नेम्स आर JCheckBox 1, JCheckBox 2, JCheckBox 3 एंड सो ऑन. इसको प्रॉपर नेम देने के लिए अगेन यू कैन राइट क्लिक एंड चेंज द वेरिएबल नेम. सपोज दिस इज JCheckBox OOP. दिस शुड बी JCheckBox like MPL. This could be something else like JCheckBox Software Engineering SE. इसका जो डिस्प्ले है इसको नॉर्मली कैप्शन कह रहे होते हैं. Let us make it okay, and the variable name should be meaningful. By default this is JButton1. This should be JButton okay for example, and this is JText area. By default name is JText area 1. इसको अगर आप सेव रखना चाहें तो भी ठीक है, चेंज करना चाहें तो स्टिल यू कैन चेंज इट. नाउ अब हम करना ये चाह रहे हैं कि जब आप रन टाइम पे इस एप्लीकेशन में डिफरेंट चॉइसेस को सिलेक्ट कर लें, ओके बटन को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से जितनी चॉइसेस ली होंगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं इन दिस टेक्स्ट एरिया, ताकि हमें आइडिया हो सके कि रन टाइम पे यूज़र ने हमें कौन कौन सी चॉइसेस दी थी. तो ऐसा करने के लिए द कोड विल बी बिहाइंड दिस बटन. आप इसका डबल क्लिक करने के बाद आप कोड लिख सकते हैं. अब हमारे पास डिफरेंट तरीके से कोड लिखा जा सकता है. लेट मी यूज वन ऑफ देम. सपोज दिस इज अ सिंपल वेरिएबल s. द डिफॉल्ट वैल्यू इज लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग. इफ अब वी नीड टू चेक कि क्या यूज़र ने ये जो हमारे पास फर्स्ट
चेक बॉक्स था, यूजर ने इसको क्लिक किया या नहीं किया, ये दूसरे वर्ड्स में whether user has selected or not this option. So to see whether this checkbox is selected or not, you can use the is selected property. So if J checkbox OOP is selected, then you can do something like as this is in fact concatenation. And due to this backslash n, the line will be changed at runtime. Let us make some changes. The given choices are this will be displayed at runtime. If is checkbox OOP is selected, then OOP को हम concatenate कर देंगे S में. In the same way, you can select, you can check other checkboxes. If checkbox MPL is selected, then concatenate MPL and then change the line. If checkbox software engineering is selected, then concatenate software engineering to S variable and change the line. Once all the checkboxes are checked, then display this S in J text area. The name of J text area is J text area 1. So J text area 1 dot set text अब आप already कर चुके हैं. Now you can display this S in J text area 1. Let me show you the result. कि अगर आप इसको रन करते हैं, लेट्स से कि आपने MPL को सिलेक्ट किया, OOP को सिलेक्ट किया और आपने SE को सिलेक्ट किया. Now you can see the given choices are OOP and SE. अगर आप suppose OOP को हटा के MPL को सिलेक्ट कर लेते हैं, you can see the given courses are MPL and SE. तो आपने यहाँ से जो जो कोर्सेज सिलेक्ट किए होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे इन दिस टेक्स्ट एरिया, और जो आपने सिलेक्ट नहीं किए होंगे ऑफ कोर्स वहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा.